Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिंग अंजलि a very good evening to you. Very good evening to everyone. आपको मेरी आवाज़ और वीडियो जो है वो क्लियर है? आप मुझे बता सकते हैं? Am I audible and visible to you on a very clear cut note? Please do let me know. Okay. Very good evening to everyone. Mansi, very good evening to you. Very good evening to you, Saurav. Very good evening to everyone. Very good evening to every single student, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग. हम अगले 2 से 3 मिनट का इंतजार कर रहे हैं. और जैसे ही हमारे जो और स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली हमारे साथ यूट्यूब सेशंस पर कनेक्ट कर रहे हैं, वंस दे आर गोइंग टू बी हियर आई वुड बी स्टार्टिंग द सेशन. हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे. हेलो मानवी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग. काना वेरी मच ऑडिबल. ओके, दैट्स रियली वेरी गुड. By the day we will be having discussion over PITS India Act and the charter. Sorry, by the day we will be having discussion over not the PITS India Act. In the previous session we had discussions over PITS India Act and this that is charter of 1793. But by the day we will be looking after Charter Act of 1813, Charter Act of 1813, as well as Charter Act of 1833. Kanchana, very good evening to you. Very good evening to all the peoples. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. In the previous session, we had discussion over BITS India at 1784 as well as Charter Act of 1793. By the day, we will be looking after Charter Act of 1813 as well as the Charter Act of 1833. Let few more people should be here. Once they are going to be here, I would be starting the session. Till the time, you guys can hear me out over India's largest learning platform. When it comes to the India's largest learning platform, there are two kinds of classes which are available. The free classes are available as well as the plus classes are available. Anjali, a very good evening to you. Very good evening to everyone. And when it comes to the free classes, that means I'm talking about the special sessions. Free classes can further be categorized into the two parts. That is special sessions as well as BIT sessions. Special sessions as well as YouTube sessions. But believe me, these special sessions or the YouTube sessions, they becomes occasional. Very limited content is delivered here. Very limited content. So I would suggest to all the peoples to have one subscription. When you will be having the one subscription, you can access to all the plus classes which are available at the platform. And when you will be going to the plus classes, you can learn from the best educator or the top educator of a particular category according to your convenience. At any time, at any place, you can connect to the sessions. Unlimited access to the course, top educators of India on the one platform, exhaustive coverage of the syllabus, complete exam preparation, regular doubt clearing sessions, live test series, answer writing sessions, study material with PDF formats, mentorship and the guidance program. Such kind of advantage you can go through when you are having the subscription. And this is the right time to purchase the subscription. Nothing can be best than this particular time because you can unlock the 40% discount. You can unlock 40% almost 40% discount at percent. This particular offer is available as far as I'm concerned. Exactly, the validity of this offer is there for 13th of May. 13 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफर का एडवांटेज ले सकते हैं. 40% जो कुछ हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें आप 40% का क्या कर सकते हैं, आपका वेव ऑफ करा सकते हैं. 71st बीपीसीएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप अगले 2 साल के लिए चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन ऑफ द अनअकैडमी for next 2 years within just 8,319 rupees. And if you are looking after the subscription of 1 year, you can purchase the subscription of 1 year within just 6,399 rupees. So do purchase the subscription. Do purchase it with unlock with KD496
when you will be using this particular raffle code, that is KD496, you will be allotted almost 40% discount, which is available at the platform till 13th of May. 13 मई तक ये 40% का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। तो आप इस डिस्काउंट से, इस राफल कोड से क्या कर सकते हैं, आप एक सब्सक्रिप्शन जो है उसको परचेज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यह मेरे बारे में है। ऐसे छात्र छात्राएं, those who are connecting here, those who are connecting for the very first time with myself and they are not having any idea about myself, they can visit out the profile of mine over Unacademy. It's Kuldeep Dubey. Do visit the profile on Unacademy. I do cater the BPCS aspirant nowadays. I'm catering the BPCS aspirant nowadays. I'm conducting the sessions of Indian polity at present, and very soon I will be coming up with the Indian history as well. When it comes to the Indian polity sessions on the plus, or on the exactly on the plus classes, I used to deliver the session by 8 p.m. Nowadays, I'm conducting these sessions on a very regular note. That means you can connect to these sessions, you can connect with me by every single day on a working days, you can connect by 8 p.m. The duration of the sessions will be of 90 minutes. So that means when you will be connecting by 8 p.m., you can stay connected to the 9:30 and you can cover your lots of good topics, lots of those topics which on the basis of which or upcoming questions or upcoming questions will be there into your prelims. I always try to have discussions over such points on the basis of the experience which I'm having. Almost working, almost delivering the sessions for last 6 years for state PCS as well as the UPSC. This is my raffle code KD496, which you guys can ask your near ones, dear ones, loved ones to use. Once anybody would be using it, I'm again and again asking, if your loved ones, your near ones, your dear ones wanted to purchase the Unacademy subscription, purchase it before this, that is 13th of May, you will be allotted 40% discount from the Unacademy. In the previous session or previous to the previous session, when I had started the historical background of Indian Constitution, this is just the third into the row. Historical background of Indian Constitution. This is the session third, just the session third. The day first, I had asked you that there were lots of good events into the British India, lots of good events up into the British India, in British India, which directly influenced the Indian Constitution. And among those events, there was the Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of Charter Act of 1793, Charter Act of 1813. We are done with all these four acts. We are done with the Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1793. Exactly, we are done with. By the day, we will be having discussion over Charter Act of 1813 as well as the Charter Act of 1833. But heading to these, before heading to these, I would request to all the peoples to be thoroughly clear. When it comes to the charter, you need to understand something. The very first charter, it was the Royal Charter. It was the Royal Charter, which was granted in the year of 1600 to the English East India Company, provided a monopoly rights, monopoly rights to EIC. That means English East India Company will be the sole authority or single entity to trade in East, to trade in East. And this, am I audible and visible to all the people, those who are here? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जो दूसरे छात्र छात्राएं हमारे साथ यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज अंजलि जी ने कहा है कि सर वीडियो जो है वो पॉज्ड है। तो जो दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं यहाँ ऑडिबल विजिबल हूँ आपको। चलिए ठीक है, तो मानवी जी का कहना है कि हाँ सर बिल्कुल आपकी
आवाज जो है वो आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी गुड। तो सबसे पहले जो रॉयल चार्टर 1600 में आया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए, ट्रेडिंग राइट्स दिए, जिसके आधार पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंगल एंटिटी होती है और यह ट्रेड करती है ईस्ट में। और इसी राइट्स को, ये जो अधिकार हैं, इनको सबसे पहली बार रिन्यू किया गया, रिन्यूएबल, इन 1793, renewable in 1793 by the medium of charter. These rights were renewed for next 20 years. For next 20 years, that means the next charter will be there in the year of 1813. So I would directly be coming over the charter of 1813, and you can hear me out over the charter of 1813. There are certain points which every single student, those who are connecting here, should be thoroughly clear in context of the charter of 1813. There were certain conditions which were responsible for the upcoming provisions or the provisions which will be there into this charter. But this is not the platform to have discussions over the historical background. This is not the so-called the platform to have discussion over the historical background behind the provisions, behind provisions of this particular charter. So, if you wanted to look after the historical background behind the provisions or the provisions which came into existence in the year of 1813, you just need to visit out the plus classes of mind. Plus classes of mind. I would directly be going through the provisions. I will directly be having discussion over the provisions of 1813. First and foremost, which you need to remember, you need to be thoroughly clear with. The company's rule was extended for another 20 years. That means first time the renewable rights, they were given in the year of 1793. They were given in the year of 1793. Right now, in the year of 1813, the rights of English East India Company, they were extended for another 20 years. That means the next charter will be there in the year of 1813. But there were certain restrictions on the rights of the English East India Company this time. Two important provisions were introduced by this Charter Act of 1813. The very first monopoly of English East India Company was ended. That means there will be certain other, that means there will be certain other companies from Britain, from Britain to trade in India, to trade in India after end of monopoly, after end of monopoly by this charter. Am I very clear to all the peoples, those who are connecting here, that the monopoly of English East India Company was ended by this charter of 1813? But still, you need to remember something. The English East India Company was still enjoying the monopoly rights or the exclusive privilege in case of tea trade एज वेल एज ट्रेड विद चाइना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1813 के चार्टर ने सर क्या कर दिया, मोनोपोली को खत्म कर दिया, मोनोपोली एंडेड। सबसे पहला पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं। बट स्टिल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी सोल एंटिटी, सोल एंटिटी टू ट्रेड in tea as well as as well as to trade with China, to trade with China. Even after the end of monopoly, this was the scenario in context of English East India Company. That means there was the surviving monopoly. That means there was surviving monopoly. That means there was surviving monopoly in case of tea trade as well as trade with China.
Am I very clear to all the peoples those who are connecting here? मैं यहाँ जो भी छात्र छात्राएं कनेक्ट कर रहे हैं, आपको स्पष्ट हूँ तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, ये जो मोनोपोली खत्म हुई है, लेकिन अभी भी जो चाय के व्यापार में और साथ ही साथ चाइना के व्यापार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी रहेगी जो क्या करेगी, व्यापार करेगी. That's what I will be having discussion in the further period of time. Nightingale, तो हमारे साथ नाइटिंगेल आरटीजी कनेक्ट कर रही है और नाइटिंगेल आरटीजी ने कहा कि सर सर्वाइविंग मोनोपोली जो है वो कब खत्म होगी, 1813 में खत्म होगी. एग्जैक्टली exactly. अभी हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं. 1833 में जाकर सर्वाइविंग मोनोपोली भी खत्म हो जाएगा. But right now, what we need to remember, we just need to remember the provision which came into existence by the Charter of 1830. So heading forward to the next provision and the next provision. This was the very first step regarding education from the British side, or you can say the very first step regarding the education from the British side was taken. The English East India Company was asked for a financial grant towards the revival of Indian literature and the promotion of science. It was directed to spend rupees 1 lakh for the purpose of betterment of education in those areas where they were have control. That means in British possession, this is going to be the second point from Charter Act of 1813. So be very clear with this. In British possession territories, in British possession territories, English East India Company, English East India Company was asked to spend rupees 1 lakh for betterment of education. For betterment of education. This was the second point. So what you can conclude the very first step towards the upliftment of education into the British India. It was taken by the Charter of 1813. Am I very clear to all the people, those who are here? क्या यहाँ जो सभी छात्र छात्राएं कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये दूसरा प्रोविजन जो चार्टर एक्ट के माध्यम से आया, यह क्लियर है या नहीं है? Nightingale RT 1 million can't understand till why China. You That's what I had just asked. If you wanted to look after the historical background why the surviving monopoly was there, you just need to connect to my plus sessions. I will be having discussion over on all such topics into the plus sessions. You just need to purchase the subscription. Do purchase the subscription using raffle code KD496. You will be allotted a 40% discount, and then I will be having discussion over all these points. Right now, what you just need to remember that the second provision, this Charter Act of 1813, this was the by this charter, the very first step towards the betterment of the education was there. And English East India Company was asked to spend rupees 1 lakh for the betterment of education in British possession territories. Third and the most important provision, third and the most important provision which every single student should be thoroughly clear with in context of the Charter Act of 1813, Christian missionaries were allowed, they were officially allowed to come to the India and engage into the religious proselytization. That means right now the Christian missionaries can come to the India from the Britain and they can ask for the conversion from the Indian people. They can ask the Indian people to convert their religion. They can ask the Indian people to embrace the so-called the Christianity. So these were the three provisions which came into existence after the charter of or by the charter of 1813. Am I very clear to everyone? So that I can head forward to the next one. But before heading to next, I just want to ask a particular question. लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज वाला कॉन्सेप्ट है, इस क्रिश्चियन मिशनरीज वाले कॉन्सेप्ट पर मेरे पास एक सवाल है और जो मैं पोल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ. यू गाइस वांट टू लेट मी नो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द क्रिश्चियन for the very first time any Christian missionary which came to the India and tried to propagate the so-called the Christianity into the country, tried to propagate Christianity into the country. The very first Christian missionary which came to the India and tried to propagate Christianity into the country. Because into the ancient Indian history or into the ancient period, there were certain attempts to propagate the Christianity into the country. I'm asking you all guys to let me know the very first person to arrive into the country to propagate the Christianity.
Is there anybody who wanted to let me know the name of that particular person? क्या आप में से एग्जैक्टली तो अंजलि जी ने कहा कि सर ड्यूरिंग द पार्थियंस when the Parthians were ruling on when the Parthians were ruling into the India, there was a popular ruler whose name was Gondu Furnace, whose name was Gondu Furnace. During the tenure of Gondu Furnace, he was the king from the Parthians. During the time of Gondu Furnace, Saint Thomas arrived India. Saint Thomas arrived India to propagate Christianity, to propagate Christianity. But he was assassinated, but he was assassinated in Tamil Nadu. This is the point which every single student, those who are connecting here, should be thoroughly clear with. Am I very clear to all the people, those who are here? So that I can head forward to the next one. क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आगे चर्चा करी जा सके. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने होंगे. देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की जब हम क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं, when we try to understand the ancient history, we can go through certain chronologies, or we just need to remember the chronology. For the very first, or the history of India starts with the Indus Valley civilization. History of India starts with the Indus Valley civilization. It was followed by the Vedic civilization. Later on, there was the Mahajanpat period. Later, and the contemporary to the Mahajanpat period, that means I'm talking about the Buddhism as well as I'm talking about the Jainism. And the Mahajanpat period was followed by the kingdom system. The kingdom system. Mahajanpat period was followed by the kingdom system. The very first kingdom which was there into the country, it was Magad Empire. It was Magad Empire, which came into prominence. And Magad Empire was succeeded by Modern Empire. Magad Empire was succeeded by Modern Empire. But before the modern rule into the country, there were certain invasions into India. There were certain invasions in India. And these or those invasions were called as pre-modern invasions. Those invasions are referred as pre-modern invasions. And when anybody wanted to look after the pre-modern invasions, they can be understood in the form of Iranian invasion as well as Macedonian invasion, as well as Macedonian invasion. And after the modern period, there were again certain invasions, and those invasions are referred as the postmodern invasions. Postmodern invasions. And into the postmodern invasion, first and the foremost, they were the Indo-Greeks. Indo-Greeks were followed by Sakas, referred as Scythians, and Sakas or Scythians were followed by so-called this that is Parthians, sometimes referred as Pehlavas, and the last one that is so-called Kusans. So what I was saying is, for the very first time, the for the very first time, initiation to propagate Christianity, they were made during the Parthians when there was a ruler. It was named as Gondu Furnace. It was named as Gondu Furnace. Am I very clear to every single student? When Gondu Furnace was the ruler of India from the Parthians, Saint Thomas arrived to the country. Arrived to country. Saint Thomas assassinated into the Tamil Nadu. This is the point which every single student, those who are connecting here, should be thoroughly clear with. And when it comes to the Charter Act of 1813, the official permission was granted to the Christian missionaries to come to the India and to engage into the religious proselytization. So these were the three important points in context of Charter Act of 1813, which every single student should be thoroughly clear with. Let's have a brief discussion over these points so that you can have a very good understanding about the points or about the provisions which came into existence as a result of Charter Act of 1813. The very first point, monopoly rights extended, monopoly extended for next 20 years. Next 20 years. Although
Monopoly ended, although monopoly ended, but still EIC, English East India Company, will be the single entity to have to trade in tea as well as to trade with China, as well as to trade with China. Coming to the next provision, for the very first time, English East India Company was asked to spend rupees 1 lakh for betterment of education, for betterment of education in British possession territories, in British possession territories. You guys wanted to let me know the term British possession came into existence for the very first time in the year of. You guys can let me know the year in which the term British possession came into existence. I'm looking after a few people to let me know the year in which the term British possession came into existence. Okay, that's very good. Coming to the third provision, Christian missionaries were officially were officially allowed to come to India and propagate Christianity. So these were the 3 points which came into existence. Which these were the 3 points which came into existence as a result of Charter Act of 1813. I hope these all points are quite clear to every single student. Right now, I'm done with this. If anybody is having any question in context of Charter Act of 1813, you can feel free to put forward a question. आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लेकर तो आप निश्चित तौर पर अपने क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं देन ओनली आई विल बी हेडिंग फॉरवर्ड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो छात्र छात्राएं अभी हमारे साथ बाईटी सेशंस का हिस्सा हैं अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है मेक श्योर बच्चा कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए एक बहुत अच्छा ऑफर आपके साथ चल रहा है आप 40% का लाभ उठा सकते हैं 40% डिस्काउंट को वेव ऑफ करवा सकते हैं 40% डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास है मेरा राफिल कोड KD496 इस्तेमाल करें और 2 साल के लिए 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन को परचेज करें एक मेरा ऑनगोइंग बैच चल रहा है 69th BPCS को लेकर इफ यू कंसीडर योरसेल्फ एज द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई हैड स्टार्टेड अ बैच बाय 29th ऑफ मार्च आई एम ऑलरेडी डिलीवरिंग द सेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटी आप वहां मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक वास्ट अंडरस्टैंडिंग को ले जनरेट करने के लिए अगर आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करना चाहते हैं प्रयास करें कि आप इस बैच कोर्स का हिस्सा हो सके और इसी सीरीज में मैं 22 जुलाई से 22 से इंडियन हिस्ट्री लेकर आने वाला हूं तो आप मेरे साथ इस पर कनेक्ट कर सकते हैं अंजलि अ वेरी गुड इवनिंग टू यू जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि 1813 का चार्टर आपको स्पष्ट है क्लियर है ताकि मैं आगे 1833 के चार्टर पर आपके साथ चर्चा कर सकूं वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर हियर जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें कि 1813 का चार्टर जो है आपको स्पष्ट है ताकि मैं 1833 के चार्टर पर चर्चा आपके साथ कर सकूं और 1830 के चार्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर समय में विलियम बेंटिक जो है वह आपके गवर्नर जनरल रहे और कुछ चेंजेस आने वाले हैं अंजलि जी ने कहा क्लियर है दैट्स वाई गुड अंजलि ओके मानवी ठीक है दैट्स वाई गुड दूसरे छात्र छात्राएं जो हमारे साथ इस पर्टिकुलर समय में कनेक्ट कर रहे हैं आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये जो प्रोविजंस हमने डिस्कस करे आपको स्पष्ट है आपको क्लियर है ओके ठीक है सो राइट नाउ आई एम कमिंग टू दिस दैट इज चार्ट प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 first and foremost what you need to remember surviving monopoly is going to be ended this time surviving monopoly going to be ended जो सर्वाइविंग मोनोपोली है वो खत्म होने वाली है वेरी गुड इवनिंग टू यू वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन मुबीना दैट्स वेरी गुड ओके तो अब सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना 1833 के चार्टर के कंटेक्स्ट में वो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो सर्वाइविंग मोनोपोली थी वो सर्वाइविंग मोनोपोली खत्म होने वाली
फिर उसके बाद जाकर अगर हम सेकंड प्रोविजन की बात करें तो सेकंड प्रोविजन क्या नजर आ रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज रीडेसिग्नेटेड एज दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो जीजीबी था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वही क्या होने वाला है, तो वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने वाला है। दैट मीन्स लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एज वेल एज लॉर्ड विलियम बेंटिक, Lord William Bentinck, the very first Governor General of India. This particular point should be thoroughly clear to all the people, those who are connecting here. Coming to the next one, it ended the activities of British East India Company as a commercial body, and it became a purely administrative body right now. That means English East India Company in the further period of time will not be trading. It will only be looking after the administration into the country of the British possession territories. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर कर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को परस्यू करेगी। जो ब्रिटिश पोजीशन टेरिटरीज हैं उस ब्रिटिश पोजीशन टेरिटरीज को सिर्फ एडमिनिस्टर करने का काम करेगी। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सर्वाइविंग मोनोपोली थी जो चाय के व्यापार में और चाइना के व्यापार में, वह 1833 के माध्यम से खत्म होने वाली है। बी वेरी क्लियर विद बोथ दीज पॉइंट। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू in further period of time the monopoly ended, if the question will be like monopoly ended, your answer should be charter act of charter act of 1830. And if the question will be like of surviving monopoly ended, surviving monopoly ended, then surviving monopoly ended by the charter of by the Charter Act of 1833. And English East India Company became EIC became a purely administrative body, purely administrative body, purely administrative body. Am I very clear to all the people, those who are connecting here? You guys can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको स्पष्ट हूँ। नाइटिंगेल जी ने फिर सवाल किया कि सर क्यों मोनोपॉली खत्म कर दिया। नाइटिंगेल जी आपको ना बर्लिन डिक्री को देखना होगा। यू जस्ट नीड टू लुक आफ्टर द बर्लिन डिक्री, you just need to look after the Millen decree as well as the demand of the traders in Europe. आपको ये सारी चीजें देखनी होगी और इन सारी चीजों को देखने के लिए मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करके मेरे साथ सेशन पर कनेक्ट करना होगा, प्लस सेशन पर कनेक्ट करना होगा। प्लस सेशन में मैंने बर्लिन डिक्री को भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने मिलिन डिक्री को भी डिस्कस किया हुआ है, 1806 की इस डिग्री को डिस्कस किया है, 1807 की इस डिग्री को डिस्कस किया है, डिमांड ऑफ ट्रेडर्स को डिस्कस किया है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं जिन्हें हम एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं, तो एडम स्मिथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्टर कहे जाते हैं। तो इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट किया है, हाउ ही हैड सपोर्टेड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी हैड डिस्कस्ड ऑल सच थिंग्स। Monopoly ended, right now they are going to give they will be having the responsibility of administering the territory. Anjali, you just need to understand this. You just need to understand they became purely an administrative body. That means they will be just looking after the administration of the British possession territories. Am I clear to you? You can let me know. They will be just looking after this. That's what I had started. If you heard me on a very clear cut note, ended the activities of the British East India Company. It ended the activities of the British East India Company as a commercial body. It became purely an administrative body. Right now, that you just need to understand something. You just need to understand this. They will be the sole authority to look after the administration of the British possession territories. No commercial activities will be performed right now because lots of other companies from the English East India, lots of other companies like English East India Company from the Britain will be there as a result of 1833 into the India as well as into the China as well as into the Indian subcontinent. Overall, we can say Indian subcontinent. Coming to the next one, just try to hear me out over it. If you guys are having idea about the very first step, please do let me know
I'm having a question. Do let me know by the medium of comment. The very first step towards centralization, the first step towards centralization was taken was taken by British Parliament in the year of in the year of जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा सेंट्रलाइजेशन को लेकर सबसे पहला जो स्टेप है, कदम जो है, वह किस वर्ष में उठाया गया था? और इसका एक मतलब है जो मैं आपसे सीधे सटीक पूछना चाहता हूँ, और इसे मैं हम इसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो इसे हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू गवर्नर जनरल was there in the act of Anjali had started in the act of regulating act of 1773. Nightingale had started in the act of 1773. That's really very good. Exactly. There was the subordination of the Bombay as well as the Madras to the Governor General. That means, what was the literal meaning of the subordination? If the governor, if the governor of Bombay and Madras wanna legislate anything, they need to take prior permission. They need to take prior permission from Governor General. That's what we had discussed when we were having discussion over the Regulating Act of 1773. But by the Charter of 1833, but by the Charter of 1833, legislating power, legislating power of Bombay and Madras governor will be deprived, will be deprived. That means 1833 Act, 1833 Act responsible for centralization in country. Am I very clear to all the peoples those who are here? Am I understood to every single student those who are here? You guys can let me know. 1833 Act was responsible for the centralization into the country. And Governor General of India will be the sole authority. Governor General of India will be the sole authority who will be having power, who will be having power to legislate in context of British possession territories, who will be having power to legislate in context of Nightingale had put forward a question, sir, what we can understand from the centralization. Nightingale, that means a single authority will be there. He will be responsible for legislating in context of the British possession territory. एक ही व्यक्ति होगा जिसमें सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होंगी, केंद्रित होंगी, उसमें वेस्टेड होंगी. इस वजह से 1833 के एक्ट को हम सेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. नाइटिंगेल, एम आई वेरी क्लियर टू यू? यू कैन लेट मी नो. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ? 1833 Act wasting the power in a single authority. And when the single authority is having power, that means he is the head for all the territory, and he will be legislating in context of the territory which was under the hold of the British government by that period. That's why this particular act is quite responsible for the centralization. The act deprived the governor. Let's have a look over the document right now. Act deprived the governors of Bombay as well as Madras of their legislative power, of their legislative power. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the British entire British India. और पूरे भारत के लिए क्या कर दिया गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको ही लेजिस्लेशन पावर दे दी गई. तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमने सेंट्रलाइज क्या कर दिया? चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया, हमने चीजों को यूनिफाइड कर दिया. आप आसान सी भाषा में उसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमने चीजों को यूनिफाइड कर दिया.
अंजलि जी ने कहा है, सर मेरे घर में सभी अभी उम्मीद है आप इसे पागल कहना चाहती होंगी और टीवी चला दिया है। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? एग्ज़ैक्टली ईयरफ़ोन्स का इस्तेमाल करो। यूज़ ईयरफ़ोन्स बेटा, यूज़ ईयरफ़ोन ईयरफ़ोन का इस्तेमाल करो। कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन आपने पुट फॉरवर्ड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। तो सिस्टम जो है वो यूनिफ़ाइड होने वाला है और यहाँ से चीज़ें जो हैं वो एक इसके अंडर आने वाली हैं। तो यहाँ से चीज़ें हम देखने वाले हैं किस एग्ज़ैक्टली ये हमें क्या नज़र आने वाला है, यहाँ से चीज़ें हमें यूनिफ़ाइड नज़र आने वाली हैं। उम्मीद है आपको स्पष्ट है। और दूसरा अंजलि जी जो आपने सवाल पूछा था, तो आप इसको क्या कर सकती हैं, ईयरफ़ोन का इस्तेमाल करिए। आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली हेडफ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। राइट नाउ कमिंग टू दिस, एक पॉइंट हमने देखा था, प्लीज़ डू लेट मी नो, द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल केम इनटू एक्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ। जीजीईसी जो है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एग्जिस्टेंस सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल केम इनटू एक्जिस्टेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। The Governor General Executive Council came into existence for the very first time in the year of 1773. What was the structure? 1 plus 4. 1, that means I was talking about Governor General. Then in the year of 1784, the strength was diminished, strength was reduced, and the strength was structure was like Governor General plus three other members. But if you guys are having idea, by the Act of 1784, he was provided the veto power. And in the year of 1793, by Charter Act, exactly, Manvi. And in the year of 1793, by Charter Act of 1793, he was provided the overriding power. He was providing the overriding power. Extension of the powers to the Governor General was constantly there. Constantly, it can be seen in every single act, whether it was the act of regulating, whether it was regulating act of 1773, whether it was regulating act of, whether it was Pitt's India Act of 1784, whether it was Charter Act of 1793. Right now, we are having discussion over the Charter Act of 1833. What we had discussed, the redesignation was there. Governor General of Bengal became the Governor General of India. He was vested with legislative power for entire British India. And there is going to be a change into the Executive Council as well. The strength of the Executive Council will be again increased from 3 to the 4. 3 to the 4. But believe me, this time he will not be having any decision making power because he is already having the overriding power as well as he is already having the overriding power as well as veto power. Veto power was entitled or vested to him by the Pitt's India Act of 1784 and by 1793 Charter Act, he was vested with the overriding power. Then what was the need? This time the question should be like, sir, what was the need to enhance the strength of the Governor General Executive Council? And who was this fourth member? The fourth member was the law member. He was there into the country to decodify the Hindu law as well as the Muslim laws. So that there can be a unique law, so that there can be a single law into the country with the help of the Hindu as well as the Muslim laws, according to which the decisions or the verdict can be there in, can be given into the country. What you need to remember right now, this law member was having limited powers. Limited powers, that means he was not having voting rights. He was not having voting rights. इसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, ये आपको समझना है, तो ये आपको याद रखना होगा. Coming to the next one, this was the this was for the very first time that the permission for Indians to have a share in the country's administration was entitled. ये सबसे पहली बार हुआ जब क्या किया गया, बोले सर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में अब इंडियंस को भी अलाउ करने की बात करी गई. दैट मीन्स मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करी गई. मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करी गई.
So if the question, if in the further prelims, if in the upcoming 69th prelims there is going to be a question, which among the following act can be considered responsible as the very first step to provide India's a small portion or the small so-called this that is rights up in context of India's administration, then be very clear it was the Charter Act of 1833, which was constantly asking, which was asking for merit-based examination into the country. That means it started that merit should be the basis of the employment to the government services, not the birth, not the color, not the religion, nor the race. ये आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है कि भाई अभी जो कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज थी, कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज थी और जो नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज थी, कवीनियंटेड सर्विसेज थी और जो नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज थी, और कवीनियंटेड सर्विसेज किसके लिए रिजर्व्ड थी? बोले सर यूरोपियंस के लिए रिजर्व्ड थी। नॉन कवीनियंटेड सर्विसेज में इंडियंस को क्लर्किकल लेवल पर क्या दिया जाता था? सर अपॉइंट किया जाता था। तो 1833 के एक्ट से क्या कहा गया कि नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज में, नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियंस को हाई पोस्ट जो है वह भी दी जा सकती हैं, किसके आधार पर? merit based examination के आधार पर। very clear to all the peoples, you guys can let me know right now। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये आपको स्पष्ट है। am I very clear to all the peoples, those who are connecting here with the convenient services as well as the non convenient services? और अगर ये क्लियर है आपको तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ये जो व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट है कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज का, नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज का, ये अरेंजमेंट का क्रेडिट किस व्यक्ति को दिया जाता है? द क्रेडिट फॉर जनरेटिंग और बाइफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज एंड द नॉन कवीनियंटेड सिविल सर्विसेज, कैन बी गिवन टू विच पर्सन? किस व्यक्ति को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है? विच पर्सन कैन बी गिवन द क्रेडिट? Narendra, what you need to remember, 1833 Act provided a provision that Indians should be given the higher post in the non-convenient services। Non-convenient services के context में था ये, not for the convenient services। अंजलि, सर्विसेज का मतलब है, देखिए, when it comes to the all India civil services, when it comes to the Indian civil services, you just need to understand the concept of the Indian civil services। मैं आ रहा हूं, जस्ट ध्यान से सुनने का मुझे प्रयास करिएगा। 23 initiator for initiator of civil services Warren Hastings, initiator of civil services Warren Hastings, he generated a post of collector, that's why we are calling it, ठीक है, that's why we are calling it, or that's why we are calling him the initiator of the civil services। when it comes to the Lord Cornwallis, he is called as father of civil services in India, just because he divided the civil services। अंजलि बहुत ध्यान से सुनना, नाइटिंगल जी आप भी बहुत ध्यान से सुनना, और सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनना। he divided the civil services into two parts, covenanted civil services as well as a non covenanted civil services। when it comes to the covenanted civil services were reserved for Europeans, that means no entry to Indians was there, no entry to Indians was there। coming to this right now, non-covenanted civil services, Europeans were holding the upper post, and Indians were allowed into non-covenanted civil services, but they were allotted the post below the clerk label or post of the clerical label, post of clerical label
एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल्स दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अंजलि जी, समझ आ गया कि कन्वीनिएंटेड सर्विसेज जो हैं वह अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड हैं और नॉन कन्वीनिएंटेड सर्विसेज जो हैं उसमें इंडियंस को भी एंट्री दिया जाता था। तो इंडियंस मतलब कलर के आधार पर हम क्या कह रहे थे कि जो सीओडी हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वह इनका अपॉइंटमेंट कर रहे थे। इंडियंस को क्लर्क लेवल के नीचे की पोस्ट दे रहे थे। 1833 के चार्टर एक्ट में नॉन कन्वीनिएंटेड सिविल सर्विसेज के लिए क्या कहा गया कि अब यहाँ सभी पोस्ट जो हैं वह मेरिट बेसिस पर दी जाएंगी, वह पोस्ट आपके कलर के बेसिस पर नहीं दी जाएंगी। वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल्स दोज हु आर हियर, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ओके, दैट्स वाई। लेकिन सीओडी ने क्या किया, इसके इसको अपोज किया। आ रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीओडी ने क्या किया, इसको अपोज किया। और सीओडी के अपोजिशन के बाद जाकर इस प्रोविजन को क्या कर दिया गया, इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। यू शुड बी थॉरली क्लियर विद दिस। सीओडी को क्या, सॉरी, सीओए जो आपका मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है, इस मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड कर दिया। वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल्स, यू गाइस कैन लेट मी नो। तो ये आपको याद रखना है। ब्रीफ कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पहले एक बार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, उसके बाद जाकर मैं ब्रीफ भी कर दूंगा चीजों को, सो दैट आपके दिमाग में चीजें जो हैं वो स्पष्ट रह सकें। इट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप इनटू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। First step into the centralization of India's administration. Country's administration was unified under one control. That means control of Governor General of India. ये कहाँ से आया? बोले सर वो जो बॉम्बे था और जो मद्रास था, इसके गवर्नर्स जो थे इनकी लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर दिया और किसमें वेस्ट कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। इस वजह से हमें क्या नजर आ रहा है सर, यहाँ कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह यूनिफाइड नजर आ रहा है किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। इस एक्ट ने प्रयास किया, किसका प्रयास किया कि ओपन कॉम्पिटिशन्स कराए जा सके फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। However, this provision was negated after opposition from the court of directors, who continued to hold the privilege of appointing company officials. अभी भी आपको यह पॉइंट याद रखना है कि कन्वीनिएंटेड सिविल सर्विसेज में, नॉन कन्वीनिएंटेड सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होते थे वह अपॉइंटमेंट सीओडी के माध्यम से होते थे। सीओडी ने सिविल सर्विसेज का प्रोटेस्ट किया। ये जो, सॉरी, एसीओडी ने ये जो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है, मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन का अपोज किया। परिणाम क्या है कि ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो प्रोविजन आया था मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन को लेकर, इसको नल एंड वॉइड करना पड़ा, हमें खत्म करना पड़ा। ठीक है। That's why only I had asked you, which among the following act can be considered as the very first step to provide Indians a small share into the country's administration? Then you should be thoroughly clear that it was the Act of 1833 which tried to provide the share to the Indians into the India's administration. But it finally came into existence by the Act of 1853. वो आगे जाकर 1853 के माध्यम से एग्जिस्टेंस में आएगा। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल गवर्नमेंट, ये जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी इसे हमने क्या कहा? तो इसे हमने गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के नाम से कंसिडर किया, इंडियन गवर्नमेंट के नाम से कंसिडर किया। काउंसिल वॉज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल और इसी काउंसिल को हमने इंडियन काउंसिल भी कहा। और लॉर्ड मैकाले जो आपके आए हैं लॉ मेंबर बनकर, लॉर्ड मैकाले फोर्थ मेंबर, लॉ मेंबर, ये क्या कर रहे हैं? बोले सर ये आपका हिंदू लॉस जो हैं और मुस्लिम लॉस जो हैं इनको कोडिफाई कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एज वेल एज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप स्वतंत्र महसूस करें, अपने सवाल को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली यू वुड बी रिस्पॉन्डेड। अदरवाइज the next charter, that is the Charter Act of 1853, we will be having discussion by tomorrow. कल हम 1853 के चार्टर पर चर्चा करेंगे और कल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर डिस्कशन करेंगे।
If you guys are having any question, you can feel free to reach out. अंजलि जी, पहला स्टेप जो है सेंट्रलाइजेशन के लिए बेटा, वो 1773 के रेगुलेटिंग में है, रेगुलेटिंग एक्ट में है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन हुआ किससे है कंप्लीटली? तो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीटली जो हुआ है, वो है आपके 1833 के चार्टर एक्ट से हुआ है। अंजलि, दैट्स व्हाट आई हैड रिस्पॉन्डेड यू। द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, मतलब हमने सेंट्रलाइजेशन की ओर एक कदम रखा, तो वो एक कदम किससे रखा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन आया किससे पूरी तरह से? तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट से आया। आप मुझे बता सकती हैं अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आप अपने क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। यह मेरे बारे में है। दिस इज कुलदीप दुबे। These are mine subject on which you guys can connect. You can connect with me on Indian history. Batch of Indian history will be started by 22nd of July. This was not the act. It was the year of 1772. Warren Hastings, when he was given the responsibility of the governor, he abolished the dual governing system. He abolished the dual governing system. Narendra. He abolished dual governing system, and for revenue collection purpose and for revenue collection purpose and for revenue collection purpose, he created a post, that is post of collector, that is post of collector. So very clear to you। अगर अभी आपको समझ आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। अगर आपके पास कोई और सवाल है नरेंद्र, तो आप निश्चित तौर पर अपने सवाल को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। In the year of 1765, as a result of Treaty of Allahabad, dual governing system was started. Revenue rights was vested with the English East India Company, and administrative rights was vested with the Nizamat, so-called the this that is the Nawab of Bengal. When Warren Hastings appointed as the governor into the Bengal, he abolished dual governing system. He created a post of collector. That's why we are referring him. इस वजह से उसे हम क्या कह रहे हैं? इस वजह से उसे हम इनिशिएटर ऑफ सिविल सर्विसेज कह रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके पास कोई और सवाल है। Otherwise, good night to everyone. Please take care. Don't forget to connect with me on Indian Polity session by 8 p.m. sharply. I used to conduct the Indian, I am conducting the Indian Polity sessions by 8 p.m. on a very regular note. You can connect with me. You can start connecting with me. This is the raffle code. Ask your dear ones, loved ones to use this. If anybody is going to use this raffle code okay, before 13th of May, before 13th of May, he will be allotted 40% discount. He will be allotted 40% discount. दैट्स व्हाई ओनली नरेंद्र आई एम कंडक्टिंग दीज सेशंस। इसी वजह से मैं इन सेशंस को लेकर आया हूँ, बिकॉज प्लस पर मैं निश्चित तौर पे सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ और वहाँ मैंने कई सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करे हुए हैं। जैसे अगर आप प्लस क्लासेस की बात करेंगे, तो जो इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, उस इंडियन पॉलिटी के बैच में जो शार्प 8 p.m. चलता है, 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं फंडामेंटल राइट्स लेकर चल रहा हूँ। यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है। I'm done with the historical background of Indian Constitution. Secondly, I'm done with the making of the Indian Constitution. Making of Indian Constitution. Third, I'm done with the preamble. Next, I'm done with the Union and its territories.
and the last I'm done with citizenship. So those peoples who have not attended these sessions on the plus classes, those who have not connected with myself on these classes, there is no need to be worried कि सर हमें इनको रिकॉर्डेड देखना होगा या हम इनको कैसे कवर करेंगे. आई एम गोइंग टू कंडक्ट ऑल दीज सेशंस ऑन दी बाईटी. मैं इन सभी सेशंस को यूट्यूब पर कंडक्ट करने वाला हूँ. तो आप निकट भविष्य में इन सेशंस पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. स्टार्ट कनेक्टिंग टू द लाइव सेशंस. आप कनेक्ट करें मेरे साथ लाइव सेशंस में, कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. और फंडामेंटल राइट से कल से ही आप मेरे साथ सेशन का हिस्सा हो सकते हैं. और ये सिर्फ प्लानिंग इसलिए किया गया है ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े. आपका जो 69th बीपीसीएस है, 69वां बीपीसीएस है, अगर आप इसे टारगेट कर रहे हैं तो आप इसे मेरे साथ अनअकैडमी के साथ क्रैक कर सकें. सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.